کنسپیریسی کے کمپوننٹس ڈالیں گے. میں وہ آگے آؤں گا. جناب کا حکم تھا کہ بی پریسائز ٹو دا پوائنٹ. تو نہیں یہ ہے اس طرح تو سر ہر آرڈر میں یہ میں آپ کو بات دکھاؤں گا. پھر تو یہ ان اینڈنگ ہے. یہ تو باتیں میں جان بوجھ کے اگنور کر رہا ہوں کہ میں ان چیزوں پہ جا رہا ہوں جن کا جواب یہاں بیٹھے کسی بندے کے پاس نہیں. میں تو اگر یہ تو باتیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اب وہ پڑھیں ریلیونٹ پروویژن ہاؤ اے چارج ٹو بی فریم, ٹائم پلیس سب کچھ آپ نے مینشن کرنا ہے اس میں. 222 سے آگے شروع ہو جائیں. وہ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ. سم ٹائمز کون سا ٹائم تھا, کہاں پہ تھے, کیا تھا. مگر میں کہتا ہوں اس کو اگنور کریں. جیسے ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ بائی مسٹر جسیا کہ جی وہ ٹھیک ہے چارج اگر انہوں نے اس طرح نہیں بھی کیا تو پریجوڈس کو. ویری رائٹ, میں اس کو اگنور کر رہا ہوں. نہیں بٹ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں صرف اس لیے اس کی اہمیت دیکھ رہا ہوں بیکاز اف دیر آر سم کیسز ویئر یو کین کنوکٹ سیپریٹلی. ٹھیک ہے, بٹ ہیئر مرڈر از ڈیپینڈنٹ آن کنسپیریسی Quite right. which is not generally the case. مرڈر ہو گیا ٹھیک ہے, وہ الگ بھی ہو سکتے ہیں. تو اگر اس کو ختم کریں تو دوسرا آٹومیٹکلی کلیپس ہو جائے گا اگینسٹ دس پرٹیکولر اکیوزڈ. جی بالکل ٹھیک فرما رہے. میں تو ایگری کر رہا ہوں سر اس سے. میں تو اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات 100% ایپٹ آبزرویشن اپریشیٹڈ. اب سر میں پیج جی سر 49 پہ جی 49 سر اب میں پڑھنے لگا ہوں. یہ 2 لائنیں اوپر میں چھوڑ رہا ہوں, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے سب کے لیے. ڈیورنگ دا کراس ایگزامینیشن آف وٹنس, یہ سر پیج 49 والیوم 7, پیج 49 والیوم 7. مل گیا سر جی. During the cross-examination of the witness, while describing the purpose for which the first handgun had already been secured by Ghulam Mustafa, the witness stated that it has been obtained for the use against Chief Justice and has already been used against film actor Muhammad Ali. The witness later corrected by saying that by Chief Justice he meant retired Justice Sayyid Jamil Hussain Rizvi. اب آگے ریلیونٹ ہے. The acting Chief Justice, while pointing out to the witness, stated he should have said judge and not Chief Justice, observed that the turn of Chief Justice had not yet come. At this stage, accused Z. Bhutto remarked from the seat, "Aayega." The acting Chief Justice directed the officer in charge of the police station on escort duty to take note of it and have an entry made at the nearest police station. Ab aage, the acting Chief Justice further remarked, not that he was offended by the remarks, but if anything did happen, somebody would be accountable. تو اس کے بعد جج رہنا چاہیے. میں کیا کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آئی بات. میں سمجھا دیتا ہوں. جی. ہوا یہ کہ ایک وٹنس کا بیان ہوا. اس نے کہا جی کہ ایک اسٹینڈ گن مجھے پہلے بھی ملی تھی فار یوزنگ اٹ اگینسٹ دا چیف جسٹس, ریٹائرڈ چیف جسٹس. تو انہوں نے بعد میں اس نے کہا سر وہ میں چیف جسٹس اگینسٹ کا کیا مطلب, مارنے کے لیے اور کیا کرنا ہے اسٹینڈ گن سے. دوبارہ پڑھ لیں ذرا اس کی انگریزی کو چھوڑ دیں سر, سبسٹنس اس کا دیکھیں نا. پہلے PW31 دکھا دیں ہمیں. 31 کو پڑھنے کی سر ضرورت نہیں ہے. اس کا یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ کانٹیکس یہ ہے جی کہ ایک وٹنس آیا, اس 31 کو پڑھنا چاہیں گے پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں. نہیں میرا مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ میں چیف جسٹس کو بھی قتل کر رہا تھا, محمد علی کو بھی یہ نہیں کہہ رہا, یہ نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہا ہے وٹنس نے کہا کہ مجھے اسٹینڈ گن میں نے پہلے لی تھی فار دا چیف جسٹس, ریٹائرڈ چیف جسٹس. ایز اے گارڈ نو سر نو, وہ فار اس کو مارنے کے لیے. اور فلم ایکٹریس محمد علی. پھر وہ کہتا ہے کہ جناب حقیقت یہ ہے کہ میں نے کہنا تھا جسٹس جمیل حسین رضوی, تو میں چیف جسٹس کہہ گیا ہوں, اس کو کریکٹ کریں. تو ایکٹنگ چیف جسٹس نے کہا کہ ابھی چیف جسٹس کی باری نہیں آئی. تو بھٹو صاحب نے کہا وہ بھی آئے گا.
بھٹو صاحب نے جب ایک ریمارکس آپ دیتے ہیں تو آگے سے میں نے بھی کچھ کہہ دیا. یہ جو غلام حسین ہے یہ اپروور ہے یا کیا ہے؟ نہیں غلام حسین وہ وٹنس ہے اپروور جو سارے آپریشن کو کمانڈ کر رہا تھا. تو نہ صرف کے ساتھ ہوا دوسروں کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. نہیں دیکھیے پھر سوری آئی ایم بلیبرنگ دا پوائنٹ. پھر یا تو وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا اپروور وٹنس کہ آئی واز دا ہٹ مین ٹو ڈو ویریس تھنگز whoever would speak against this gentleman. ٹھیک ہے تو انہوں نے بات کی تھی تو اس کو بھی ماننا تھا. محمد علی نے بات کی. اس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس نے کہہ دیا کہ مجھے ایکسٹین گن ملی تھی چیف جسٹس کے اگینسٹ لگانے کے لیے, بجائے جج کے نام چیف جسٹس کا نام لینے کے لیے لفظ چیف جسٹس کہہ دیا. چیف جسٹس گاٹ اوفینڈڈ. وہ تو میں سمجھ گیا. بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا آئے گا. میں دوسرا پہلو وہ تو بات سمجھ گیا. اینڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہوگا, اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو میں آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں. اور دوسرا کہتا ہے میں اوفینڈڈ ہوں. اوفینڈڈ ہوں اور اگر ہوا تو میں آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہراؤں. اب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس سچویشن میں جب جج کا ملزم کے ساتھ پرسنل گرج ہو جائے اور جج اس کو چاہے کہ سزا ملنی چاہیے تو کیا وہ جج رہے گا؟ یہ ہے میرا پوائنٹ. اس میں ایک اور پہلو بھی ہے. اگر آپ پیج 50 پہ آ جائیں, ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پیج 50 پہ دیکھیں سائن سب کر رہے ہیں, وہ سارے ہی کر رہے ہیں. نہیں اگر اوپر دیکھیے the acting chief justice directed, he doesn't say the court directed. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ باقی یہ سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے. یہ بات پتہ نہیں اب یہ بھی میں تو نہیں مطلب if it's a collective court so then you write unless there's a dissent or something. صاحب اس کو تھوڑا الاؤنس دیجئے کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں انگریزی میں ان کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. اب وہ تو چلے اس کو اتنا امپورٹنس. پی ڈبلیو کون سا نمبر تھا؟ 31. آپ کنسرن کہہ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں بلوچستان کی 30 انگریزی بہتر ہے؟ 31. اچھا چلے اب پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے سر, پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ باعث دکھا رہے ہیں. یہ باعث ہے غصہ کر گیا اس جو آپس میں ان کی یہ ہر آپ اس کو ایکیوز بنا رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے خلاف پرچہ کروانا, یہ ہے اس کا مطلب. یعنی کمپلیننٹ بن گئے, کمپلیننٹ بن گئے نئے کیس کے لیے. جج یہ کمپلیننٹ بن جائے تو کیا پھر اس کو بیٹھنا چاہیے تھا اس ٹرائل میں؟ کوسچن یہ ہے. اور کیا باقیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا جنہوں نے آرڈر سائن کیا؟ یہ پوائنٹ ہے. یہ جو باعث میلس ہم ڈھونڈ رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے؟ تو وہ تو کہتا ہے کہ اس کا نام سے رپورٹ درج کراؤ اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اس کا مطلب میں دنیا میں نہ رہا تو پھر اس کو پکڑ لینا. یہ 107 اور 151 کی کاروائی کرنا چاہتا ہے. وہ اور چیز ہوتی ہے اس میں دونوں اکٹھے. کہا کہ اپریہنشن کر دی کہ یہ مجھے مروا دے گا, میڈیکل ہو گیا نا. تو سر آپ کا اس کا مطلب ہے جس بندے کو آپ چاہتے ہیں کہ سزا ملے, میری خواہش ہے اس کو سزا ملے کسی اور کیس میں, تو اگر آپ اس کا ٹرائل کر رہے ہیں تو اس کی فیٹ کیا ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. دوسرا پہلو یہ بھی تو ہے ملک صاحب کہ جو اگر ملزم نے کوئی بات کر بھی دی وہ تو آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے اس آرڈر میں, یا تو پھر اس کو پھر بیان کے لیے بلائیں. نہیں پہلے تو آپ نے کہا نا یہ سٹارٹ چیف صاحب نے لیا, ٹانٹ انہوں نے کی کہ ابھی اس کی باری نہیں آئی. یہ وہ کس کو سنا رہے تھے یہ بات؟ وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ وہاں کون تھا جو باری لا رہا تھا؟ یہ باری تو ان کو کہہ رہے ہیں نا. تو اب جیسے آپ مجھے کچھ کہیں تو میں آگے سے کہہ دوں تو آپ کہیں ہاں جی آپ نے تو کنٹیمپٹ کر لیا, بس ٹھیک ہے ہم نے جو کہا وہ چھوڑ دیں. آپ جج کی کرسی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی چیف کی باری نہیں آئی. What do you mean? اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو مارتے ہیں. وہ آگے سے اس نے کہا آئے گا, اب کہہ دیا ہوگا. اب اس کے اوپر پورا آرڈر لکھوانا کہ اسکارٹ والے کو کہو کہ تھانے جاؤ, رپورٹ درج کراؤ, تاکہ آگے کوالیفائی کر رہے ہیں کہ کل کو. ملک صاحب ہوا کہ ویسے ہی آرڈر کر دیا تھا کیا جی؟ یہ رپورٹ کر دی تھی جج صاحب نے جی, وہ آرڈر میں لکھی ہے چیف جسٹس آپ ابھی آرڈر پاس کریں کہ بھی ان کو لے جاؤں, تو یہ تو لے جائیں گے مجھے. یہ پوچھنے اس میں کوئی دوسرا تو رائے نہیں ہے, تجربہ کر کے دیکھ لیں. میری وجہ سے کبھی نہیں ہوتا ایسی بات. نہیں چلے, میں تو ویسے آپ کو بات کر رہا ہوں. ابھی چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ہے, آپ تو خود چیف جسٹس رہی ہیں. اب وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس بندے کے خلاف یہ کاروائی کرو, who will dare? And in that time
at that time when there is a has marshal. not been brought on the record कि वाकई हो गया था. नहीं, वो तो ऑब्वियसली हो गया होगा, वो उसकी जरूरत है, वो जो बेचारा सब इंस्पेक्टर है कि वो कंप्लाई ना करे. तो आप इसमें बात नोट करें ना कि कितना पर्सनल मेरे अंदर वेनम है. इसको ऑफिस पहले आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. हो या ना हो, लेकिन ऑर्डर से पर्सनल ग्रज सामने नजर आ रही है. साबित है, बस. एस्टेब्लिश That's what you है, are saying. नजर नहीं आ रहा, एस्टेब्लिश हो गया. इसको ऑफिस एंगल से भी दे सकते हैं मलिक साहब, अगर खुदा न खास्ता इनको कुछ होता तो पर्चा बिल्कुल पर्चा तो ये इस पे बन सकते थे केस. 100% बन सकते. 100%. चले पहले हो गई उसको हमारा बात. लेकिन अफसोस ये कि पायलट कहते हैं 5 से पहले हो गए, मौका जी, नहीं मिला. आगे क्या हम अच्छा सर, अब मैं अगर इस स्टेज पे आपको वो ट्रिब्यूनल की बात बता दूं जिसमें वो कसूरी साहब का स्टेटमेंट ट्रिब्यूनल ने रेफर किया है. ये सो आई एम नॉट एड्रेसिंग यू प्लीज. नहीं, आप हमें बताएं ना. आप कोर्ट से बात कीजिए, मैं ठीक है जी, आप हमसे बात करें. कसूरियत तहम्मुल रखिए. I have nothing personal against you, Kusuri Saab. You are respectable from me. I am referring the record. I don't say. हमें मुखालिफ सर करें. मगर अच्छा नहीं लगता नहीं ना. नहीं, अब क्या करें, बुजुर्ग हैं, हम उनको मना कर रहे हैं, आपको नहीं सुने हम क्या. पहले ये बता दें ट्रिब्यूनल बना कैसे और क्या हुआ. सर अब मैं पहले एक तरफ से फारग हो जाऊं तो फिर बता देता हूँ. ये ट्रिब्यूनल को रेफर करें. ट्रिब्यूनल सर इस तरह बना कि गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया. गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया अंडर द ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरीज ऑर्डिनेंस 1969 के तहत. वन मैन ट्रिब्यूनल था. ये नोटिफाइड हुआ इन गैजेट ऑफ पंजाब ऑन 11th of December 1974. इसकी जो रिपोर्ट आई उसकी कॉपी हमें मिली है, उसकी प्रोसीडिंग हमें नहीं मिली. इसका ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, इसके पीछे वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हैं उसके, अगर वो कहते हैं मैं वो भी पढ़ देता वो हूँ. मैंने पढ़ ली है पूरी रिपोर्ट, रिकॉर्ड का हिस्सा है. रिकॉर्ड का हिस्सा है. उसका पेज कौन सा है? 14 पे सर, जिसमें ये लिखा है ये है पेज 14 है इसका. वो कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम नहीं सर, एक ही इतनी सी रिपोर्ट है. क्योंकि उसमें उन्होंने दिखाया है कि दे मे बी अदर पर्सन्स हु मे बी इन्वॉल्व, कुछ उनके आपस में कुछ चल रहे थे. नहीं, ये और चीज है, वो और चीज है, ये और चीज है. आप वो रिपोर्ट अगर देख लें जरा. मैंने देखी हुई, क्या पॉइंट क्या बता रहे हैं. सर मैं ये पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा, अगर इजाजत दे. इसको पढ़ लेना. जी पढ़ें जी प्लीज. मैं पढ़ देता हूँ, चलिए आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी. कौन से ये सर पेज 14 पैरा 15. कॉपी भी है, कॉपी है या नहीं हमारे पास. और ये ट्राइब्यूनल ने अपनी फाइंडिंग किस तारीख को ये कंप्लीट की है उसने. है किसमें? मैं सर बताता हूँ. ये पढ़ी, ये है ओरिजिनल तो हमारे पास है, पता नहीं कॉपीज बनी है या इसमें नहीं. कौन सा पेज? आप ऐसा करें, आप पढ़ लें, हमारे पास ओरिजिनल है, हम कॉपीज कर लेंगे बाद में. आप पेज बता. 22 फरवरी इसके 1975. ऊपर पेज पेंसिल से लिखा हुआ है. सर जी वही टाइप होना पेज. टाइप पेज है ना जी. ये 14 है. टाइप पेज 14 उसके नीचे पार्ट 2 लिखा हुआ है. रिपोर्ट ऑफ द ट्राइब्यूनल. नहीं, इसमें तो हमारे पास नहीं है जी. पैराग्राफ कौन सा है? पैराग्राफ 15 सर. ये जो अब ये देखें, ओनली मोटिव वाला इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई और आपने एक ट्राइब्यूनल बना दिया, तो इन्वेस्टिगेशन फिर क्या होगी? इन्वेस्टिगेशन को रोका तो नहीं ना ट्रिब्यूनल ने जी. उसने तो आगे जाके उनको गाइडेंस दी है कि इस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन. एडिशनल फैक्ट फाइंडिंग मशीन है. हाँ उसके इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है. Why should there be a tribunal? वो मैं उस पे तो सिर्फ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ उसमें जो कि इस केस के लिए बड़ी जरूरी है. वो आप उसको डिक्लेयर कर दें कि ये वो गलत. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाय द इन्वेस्टिगेटर, नॉट बाय दीज ट्राइब्यूनल. बिल्कुल आई एम विद यू सर कि कहीं जरूरत नहीं है क्रिमिनल इंसिडेंट में ट्राइब्यूनल बनाने की. वो तो एलिगेशन है, उसकी एविडेंस कलेक्ट करें. बिल्कुल ठीक. मगर एक सर्कमस्टांस आ गया ना उसमें, मैं तो वो रेफर करना चाह रहा हूँ कि अब वो एक चीज आपने खुद ही एक ऑर्डर. आई थिंक अगर हम उसका सिनारियो देखें, एट दैट पॉइंट इन टाइम Mr. Bhutto was the Prime Minister and allegations were being made, so probably to
raise the stakes or whatever you want to call it, a judge of the High Court was constituted as a tribunal کہ کہیں یہ دیکھیں پولیس تو نہیں کرے گی صحیح انویسٹیگیشن, تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے, اور میرے خیال میں یہی وجہ ہوگی. ملک صاحب اس طرح کے ٹریبیونل بنے جب آپ ایشو کو پار کرنا چاہیں تو پھر ایسے ہوتے ہیں, سچ دونوں طرف جاتی ہے نا بات. بٹ دا پوائنٹ آف مائی لارڈ یحییٰ افریدی از ویری ریلیونٹ بیکاز ان کریمنل کیس اٹ از آلویز مگر بن گیا نا, میں تو اس لیے ریفر کر رہا ہوں نا. جی بتائیں پھر. پڑھے in explaining the mention of motive in the FIR, اب یہ آگے بڑا ضروری ہے. The complainant made it clear, and who is the complainant? Made it clear that it does not necessarily mean that he was subjected to this and at the precedent attack directly at the bidding of the Prime Minister, or that the attack was organized by someone in government or party. He said, on political differences, whatever their nature or extent, such a public condemnation by the Prime Minister, who happened to be, for the time being, the repository and source of all political and governmental power, could prompt a die-hard and over-enthusiastic person or a trigger-happy individual in the government or outside of the party or not to accomplish his extermination from the scene. اب یہ وہ جو بات ہے کہ وہ ان کا نام آیا تو کیا وہی تھے. اب وہ ٹریبیونل ریفر کر رہا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کو. دس از ہز کیس, ہی ڈڈ ناٹ اپیئر, آئی ڈونٹ نو ویدر ہی اپیئر اور ناٹ, بٹ دس از ان دا رپورٹ. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا, انہوں نے ان کی اسٹیٹمنٹ بتائی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں, کوئی ان کی باتیں سن کے شاید کسی اور نے بھی کر دیا ہو. یہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اچھا یہ ہو گیا. اب کیا ابھی یہ جو ٹرائبیونل کی رپورٹ ہے یہ 75 کی بیٹا ابھی نہیں. جی سر, ٹرائبیونل کی جو رپورٹ ہے اس میں کچھ ڈائریکشن دیے تھے, یہ دیے تھے, اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ اب پتہ نہیں, وہ تو انویسٹیگیشن کا کام ہے. اب اس کا مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا تھا یہ لائنوں پہ کرو. اب یہ تو جنہوں نے چلان دینا تھا, رپورٹ دینی تھی, وٹنسز دینے تھے, ان کا کام تھا نا. یہ ٹرائل کورٹ میں یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی؟ ہاں وہاں آئی ہے. تو ان کے بیان سے کنفرنٹ نہیں کروائے گے؟ نہیں, وہ انہوں نے اجازت نہیں دی کیونکہ بیان تو پتہ نہیں آیا. بہرحال وہ تو بڑی سر لمبی. ابھی میں تو صرف ایک گواہ کو ٹچ کروں گا, میں آپ کا ٹائم بچاؤں گا. دیر آر 41 وٹنسز. میں نہیں چاہتا پھر بڑا لمبا ہو جائے گا. 41 کی نہیں, کمپلینٹ کی چونکہ اسٹیٹمنٹ آ گیا, وہ کنفرنٹ ہونا چاہیے تھے. سر وہ آنا چاہیے تھا. وہاں کنفرنٹیشن کو پرمٹ ہی نہیں کیا گیا. انہوں نے, اب آپ دیکھیں گے وہاں پہ وہ اب اتنی باتیں ہیں نا جی, اتنا زیادہ ہے مٹیریل کہ وہ ٹائم کا ایشو آ رہا ہے آپ کے پاس. اب 41 وٹنسز ہیں, میں صرف ایک گواہ کو فوکس کروں گا, باقی آئی ول ناٹ گو ٹو ادر ایویڈنس. سو اب سب ہم آ جائیں اس پہ. ایویڈنس آف مسعود محمود, PW, he is PW2. مسعود محمود PW2 سر. کون سا والیوم میں؟ ابھی میں اس کو پڑھ نہیں رہا جی, میں ابھی ذرا تھوڑا سا والیوم نوٹ کر لوں. والیوم 2 ہے, والیوم 2 ہے اس کا. ذرا سٹوری ادھوری رہ جائے گی. یہ رپورٹ کا لاسٹ پیراگراف پڑھنا ہے, because my colleagues don't have the benefit of this report. یہ والا ڈائریکشن والا 36. ہاں. In short, the direction that I propose giving to the investigating agency are the following: a more thorough and expert examination of the spot, preservation of property connected with the crime already recovered or recoverable from the spot, expert examination of all the recovered article together with a view to narrow down the class of weapon used in the commission of the crime, natural witnesses to the occurrence, that is resident of the area, invitees at the house of Bashir Shah, the patrol parties to be subjected to more purposive interrogation, particularly for ascertaining the number of shot fired, number of weapons used, and the suspect.
and the surviving occupant of the car should have been positively interrogated on certain aspect of the investigation, the material witnesses in the case, and the suspect to be fully protected against physical harm. मैं पूछना चाहूँ जो 41 विटनेसेस थे कार के ऑक्यूपेंट्स थे कार के ऑक्यूपेंट में स्वाय कसूरी साहब के बाकी कोई भी विटनेस बॉक्स में नहीं आया. अच्छा ये दूसरे जो थे इनवाइटीज एट द हाउस ऑफ बशीर शाह. नो अच्छा the other thing was the how many shots were fired at the car. Nobody knows, sir. नहीं कार में उन्होंने कहा ना छन्नी हो गई. काफी उनसे एम्प्टीज ली थी उन्होंने स्पॉट से. नो आमतौर पे तो केस प्रॉपर्टी बन जाती है. वो बनी ना ये एम्प्टीज बनी केस प्रॉपर्टी. कार नहीं कार को तो उसमें कितने जैसे उन्होंने कहा ना कि there was one entry. अगले दिन इन्होंने स्पुर्दारी पे ले लिया. नहीं उसमें कितने निशान थे. अब ये तो उन्होंने नंबर ऑफ रिकॉर्ड में कुछ आया कि वो जो जिसने उसको एग्जामिन किया था उसकी फोटोग्राफ ली थी वो बात आई. बट सर नहीं मतलब मेरा तो वन शॉट है या मौत. नहीं काफी है वो सब शायद आप बता चुके हो, शायद मैंने मिस किया हो. एक कंप्लेंट आई है कंप्लेनेंट की तरफ से, तो फिर जो इन्वेस्टिगेशन वो एट द टाइम एंड द अकरेंस टुक प्लेस, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और रुख मुड़ गया मिस्टर भुट्टो की तरफ. उस दौरान क्या इनकी कोई स्टेटमेंट आ गई चार्जिंग मिस्टर भुट्टो फॉर द मर्डर ऑफ हिज फादर? कहाँ कंप्लेंट में या इस केस में? नहीं इस केस में कंप्लेनेंट की फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई और वो इन्वेस्टिगेशन का रुख जो था वो मिस्टर भुट्टो की तरफ मुड़ गया. ये 77 की बात कर रहे हैं. हाँ जी, तो उस दौरान इनकी कोई हाँ आई है, इनका तो कोर्ट में भी स्टेटमेंट आई है. कोर्ट से पहले नहीं कोर्ट से पहले इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेट आई हो. वो कंप्लेंट फाइल की वो बता रहे थे. जब वो कंप्लेंट फाइल के बाद कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को नहीं वो मेरे इल्म में उस पर एफआईआर में तो नहीं है ना. वो जिक्र तो है भुट्टो को. उनका केस कोर्ट में भी यही है कि ये उन्होंने पूरा नरेट किया है किस तरह मैंने पार्टी ज्वाइन की, किस तरह मैंने मुखालफत की, क्या क्या ग्राउंड थी मेरी मुखालफत की. मैं उनके फैसले के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान असेंबली का सेशन अटेंड करने चला गया. अगर वापस में फिर वापस भी पीपल्स पार्टी चले गए. तो साहब बड़ा कुछ बातें हैं. बिल्कुल वो चले क्या है जरा बता दें. बिल्कुल चले गए. इन्होंने टिकट मांगा 77 में पीपल्स पार्टी का, टिकट डिनाइड हुआ. इन्होंने बाहर के मुल्कों में गए, वहाँ बातें की, वहाँ भुट्टो साहब की तारीफ की. ये रिकॉर्ड की बातें आप कहते हैं पढ़ देते. क्रिमिनल कंप्लेंट इनने किस तारीख को फाइल की? कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ पे. वो जो ऑर्डर आपने पढ़ा उसमें लिखा है अगस्त में शायद की है. ऑफ विच ईयर? 77 जब मार्शल लग गया. वो तो फिर आप इनका मेरी सबमिशन ये है कि जो आप सुन रहे हैं उसके लिए इनका स्टेटमेंट रेलेवेंट ही नहीं है. स्टेट ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था नहीं कंप्लेनेंट से ज्यादा. चलें जैसे इनका स्टेटमेंट रेलेवेंट ही नहीं है. मैं उसको टच ही नहीं करता, मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता. चलिए आगे चलें क्योंकि वो बड़ा लंबा है. वो जो बातें मोटी मोटी आपने पूछी हैं कि ही रीजॉइन द पार्टी, he applied for the ticket, he has admitted this fact. He admitted this fact in cross examination. That's applied, but he said this was my strategy because I had a fear and so I wanted to protect myself. ये इनकी explanation है, but ये fact admitted. But मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं जो सबमिट करना चाह रहा हूं कि there was only one witness against Bhutto, one witness, and that is Masood Mahmood. If your lordship accept his testimony, if your lordship comes to the conclusion that he is speaking the truth, his evidence inspires confidence, it is natural or probable, then that remaining evidence may be considered as supporting or corroborating. Then consider. But if your lordship comes to the conclusion that this evidence of the witness is not reliable, it does not connect Bhutto, it does not inspire confidence in the mind of a prudent man, then there is no need of going further. Then to the extent of Bhutto, the case is over, because no other witness has charged Bhutto. You are taking us now to the testimony of Masood Mahmood. Yes, sir. I was taking you to the testimony. मैं सर
अब मैं ये देना भी उसकी टेस्टिमनी जैसे पेज कौन सा है अब मैं इसके बड़े ही थोड़े थोड़े पोर्शन पढ़ूंगा ताकि जनाब का टाइम बच जाए क्योंकि ये जो क्रॉस एग्जामिन चीफ है और फिर पहले दूसरी बात ये है कि फर्स्टली आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू द एग्जामिनेशन ऑफ चीफ ओनली I will not touch the cross examination. And PW2, sir. Masood Mahmood, PW2 is examination chief consists of around 17-18 pages. But I will read just 10 pages. Ji. And thereafter I will make page volume 2. Volume 2, page and thereafter 64. Thereafter, sir. And thereafter I will, after reading this. After reading the examination chief, thereafter I will make the submission and I will show that if this evidence, this statement is accepted that there was no cross-examination on behalf of Bhutto, even then this cannot be trusted. That is कौन सा पेज चले? Page 64. Malik sir, he was also executed. नहीं, he was a prover, madam. He was a prover. Prover भी तो उसमें execute हुए. नहीं, अप्रूवर को तो माफी मिलती है तो वो बयान देता है ना जी, उसको तो बस execute हुए हैं prover. नहीं, इस केस में तो कोई अप्रूवर एग्जीक्यूट नहीं हुआ. अप्रूवर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड मैम बिकॉज यू हैव टू ग्रांट हिम पार्डन. तो बड़ा मेजर हाँ, चूंकि लॉ को अप्लाई नहीं किया तो इसलिए मैंने पूछा. हो सकता है बाद में उनको भी कर देते हैं, काम निकालने के बाद उनको भी कर देते हैं. नहीं, वो बड़ा क्लेवर था, उसने दोनों तरफ खेला है. वेरी क्लेवर मैन ही इज. ये मैं कुछ जाती राय नहीं दे रहा, मैं तो उनको देखा भी नहीं. जो इमर्ज हो रहा है इस एविडेंस से मैं उसको रेफर कर रहा हूँ. बड़ा इंटरेस्टिंग है. पेज बताए. करूँ शुरू सर? पेज 64. आपसे पूछ. PW2, Masood Mahmood, son of late Abdul Ghani, 54 years of age, formerly Director General FSF on SA. SA is solemn affirmation. At that time, the statements were not recorded on oath. It was on... पता है हमें. मुझे नहीं पता सर. I joined the police service. ये skip करें. क्या? नहीं सर, नहीं, ये तो सारी चीज है, ये skip नहीं होगा. अच्छा. ये हो आपने चलें फिर पढ़ी मैं आपको पहले बता ना मैं आपको बता देता हूँ मैं चाहता क्या हूँ. इस सारी स्टेटमेंट को मैं पढ़ के आपसे 3 चीजें मैं कहूँगा. एक के भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई इस स्टेटमेंट से, मसूद महमूद की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई और टास्क क्या था मसूद महमूद को लगाने का. तो फिर मैं कहूँगा कि क्या इसकी सीवी जो है उसको देख के इसको ये टास्क असाइन हो सकता है. प्रूडेंट मैन मानेगा. आप ड्राइवर रखते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या कि इज अ गुड ड्राइवर, यही है ना. अब एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आती तो आप उसको ड्राइवर तो नहीं रखेंगे. ये इसलिए बड़ा जरूरी है. ये स्किप ये इसको पढ़ूंगा. I joined the police service of Pakistan in September 1948 after completing my training at the police training college in East Pakistan. I served in various capacities in the province. The last post that I held in East Pakistan was additional superintendent of police, West. I served as superintendent of police and later as deputy inspector general. In 1965, I was selected as deputy secretary central with headquarters at Ankara. Before that, I had served as the deputy secretary both in the provincial and central government, beside holding some other posts. I returned to Pakistan in September 1970 at my own request. On my return, I was asked to wait for a post. After some time, I was posted as Deputy Secretary, Ministry of Defence, and later promoted as Joint Secretary and Additional Secretary in the same ministry. I may mention that despite my best efforts, I failed to see Mr. Waqar Ahmed, the Establishment Secretary, during those days. I was promoted as Additional Secretary and then transferred to a punishment post, that is Managing Director, Board of Trustee of the Group Insurance and Benevolent Funds in the Establishment Division. I may mention here that I had already been superseded by 4 juniors. I was asked by Mr. Waqar Ahmed to call on the then Prime Minister in the morning of 12th of April 1974. I was told that I had to call
on Mr. Waqar Ahmed before this interview. Mr. Waqar Ahmed was very good to me at that meeting, and he informed me that the Prime Minister was going to offer an appointment to me, which I must accept. आगे उनका objection है, मैं उसको छोड़ देता हूँ. Mr. Waqar Ahmed's name is not mentioned. He drew my attention to the state of affairs of myself and my wife, to the fact that I had small children, and to rule which provides for recruitment at the time of officer of grade 21 and above. The impression that I carried on my mind was that my job was at the mercy of the Prime Minister and Mr. Waqar Ahmed. I then had my first interview with the Prime Minister after he had assumed the office. At this interview, the Prime Minister said kind word to me, reminiscences about our past associations, praised my, ये बड़ी ज़रूरी है, praised my integrity and capacity to hard work, and offered me the appointment of Director General of FSF. I was directed by the then Prime Minister not to accept instruction from then Minister for Interior, Mr. Abdul Qayyum Khan. I was advised by him against the termination of services of the re-employed officer without taking his prior permission. He told me that they were useful officers. Mia Muhammad Abbas was particularly mentioned. The Prime Minister asked to be on the right side of Mr. Waqar Ahmed. He particularly mentioned about the state of health of my wife, my children, and the fact that I had young children. The then Prime Minister told me that I need my job, and I was expected to raise the force into deterrent one. The Prime Minister told me that Mr. Waqar Ahmed did not like me, and it was in this context that he had asked me to be on his right side. The Prime Minister spelled out what he meant by making the force a deterrent one by telling me that he wanted the people of Pakistan, his minister, MNAs and MPAs to fear it. The Prime Minister told me that a written directive has been issued to the force for setting up an intelligence wing. उसके बाद मैं skip करके सर next page के पैरा आ रहा हूँ. I assume charge. ये मैं skip कर रहा हूँ. I assumed charge of the post of Director General of FSF on 23rd of April 1974. The duties of the incumbent of the post which I had accepted are contained in the Federal Security Force Act 1973. This was besides the charter given to me orally by the Prime Minister. The Prime Minister wanted the force to be available to him for political purposes. On an objection, ये भी मैं छोड़ता हूँ. अब नीचे आ गया. In the ये किस लिए बनाई गई? Number A, breaking up of political meetings, harassment of personage from both in his own party and opposition, induction of plainclothes person in public meeting addressed by him to swell the crowd. By plainclothes men, I meant those who were enrolled in the FSF. I had been giving direction to be present at all the places where the Prime Minister toured. I was also given direction to be present in the National Assembly chamber if the Prime Minister was attending the session or if he was in its own chamber in the National Assembly. उसके बाद मैं skip कर रहा हूँ. Next page पे पैरा शुरू हो गया. In June 1974, when Mr. Ahmed Raza Kasuri was speaking in the National Assembly, Mr. Zulfiqar Bhutto addressed him directly and not through the speaker as follows. He asked him to keep quiet, and he had enough of him, and that he would not tolerate his nuisance anymore. This is more or less what the Prime Minister said. A day or two later, I was sent for by the Prime Minister. He inter alia said to me that he was fed up with the obnoxious behavior of Mr. Ahmed Raza Kasuri, and that Mia Muhammad Abbas, an officer of the FSF, knew all about his activity. This officer is an accused in this case. The then Prime Minister further told me that this officer has already been given direction through my predecessor to get rid of Ahmed Raza Kasuri. ये अब वो कंस्पिरेसी पहले से ही है. इस ऑफिसर को ये टास्क दे दिया गया है मियां अब्बास को, पहला जो इनका प्रीडिसेसर है.
The Prime Minister went on to instruct me that I should ask. The Prime Minister further told me that this officer mean Mia Abbas. वो जो ऊपर नाम had आया ना, already been given directions. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये इसको नोट कर लेंगे कि इसको डायरेक्शन हो गई है. Wasn't the direction to Mohammad Abbas in itself sufficient? सर मैं इसी पे आगे बात करूंगा, मैं सारा पढ़ लूं थोड़ा ताकि इसमें बहुत इंटरेस्ट की बातें हैं. मैंने यहाँ तक कहा है कि मैं चीफ पे बहुत कम जाऊंगा, सिर्फ 2-3 उसके पैरे पढ़ूंगा. मैं इससे ही आपको परसुएट करने की कोशिश करूंगा कि ये एविडेंस रिलायबल नहीं है. दिस इज माई टास्क. To get rid of Mr. Ahmed Raza Kasuri, the Prime Minister went on to instruct me that I should ask Mia Muhammad Abbas to get on with the job and to produce the dead body of Mr. Ahmed Raza Kasuri or his body bandaged all over. He said to me that he would hold me personally responsible for the execution of this order. I was, ये बड़ा important है. I was naturally shaken to hearing these orders and pleaded with him that execution of these orders would be against my conscience and would certainly be against the dictates of God. यहाँ मैं pause करता हूँ. Where is the conspiracy? Where is the conspiracy? If we accept that this was said to this witness by the then Prime Minister Zulfiqar Ali Bhutto, and he says, sir, no, this is against not only my conscience, but against the dictates of God. Now, if your Lordship look at the definition of conspiracy in section 120A, so does it fall under that, sir? मैं तो चाहता था कि मैं जरा डिटेल पढ़ के इस पे बात करूं, मगर अभी अगर आप इसको देख लें. मैं देख ही रहा था. क्या मैं क्या करूं? I can multitask. इससे ये लग रहा है कि जैसे वो एक उसको बता रहे हैं, इन्फॉर्म करना कि ये मैं तय कर चुका हूँ. और वो आगे मैं बताऊंगा ना कि अगर उसको बताना ही मकसूद था कि काम कर दो तो फिर इसको बताने की क्या जरूरत है. कंस्पिरेसी की बेसिक चीज तो सीक्रेसी है कि मैं एक बात दूसरे को नहीं बताना चाहता. ये बताएं, ये जो अपने मियां मोहम्मद अब्बास साहब थे, इनने कन्फेशन किया था? कन्फेशन किया, रिट्रैक्ट किया. नहीं, उनने जो कन्फेशन किया था उसमें उनने क्या फरमाया? उसमें यही फरमाया कि जी हाँ जी ये ठीक है, ये साजिश हुई थी, मुझे इसने भी कहा था. इसने कहा था? महमूद ने भी कहा था, पहले ने भी कहा था, पहले भी नहीं कहा था, मगर वो रिट्रैक्ट कर गया. उसका कन्फेशन हाई कोर्ट ने भी यूज नहीं किया अगेंस्ट भुट्टो, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट में फिर उसने स्टेटमेंट दे दी कि नहीं जी वो मैं रिट्रैक्ट गलत किया था, मैं सही कर रहा हूँ. उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे. दिस आई एम रेफरिंग फ्रॉम मेजॉरिटी जजमेंट. His statement was not considered. My question is, I am stopping here. Just what was my purpose to involve this man? अब आगे पढ़ेंगे तो और बातें आएंगी. Just to convey this message to that Ghulam Abbas, Mia Abbas. So it could be conveyed to somebody else. It could directly be called by the Prime Minister. तो भी क्या किया? अब आगे देखेंगे तो और बातें आएंगी. पढ़ूं सर फर्दर. आगे जी. The Prime Minister lost his temper and shouted, saying that he would have no nonsense from me or from Mia Muhammad Abbas. Then he raised his voice and said to me, you don't want Bukar chasing you again, do you? I returned to my office in that perplexed state of mind. अब ये बड़ा important है कि the man is ordered or asked something by the Prime Minister. He has not said, yes sir, हुक्म की तामील होगी जो हमारे सबॉर्डिनेट ऑफिसर इवन जुडिशरी में हर जगह करते हैं. उसने ये नहीं कहा. उसने कहा नो सर, आई कांट डू दिस. This is against my conscience, and not only conscience, this is against the dictates of God. And then he says, in this perplexed state of mind, he came to his office, he called me Abbas and narrated that order verbatim. He didn't say that I asked him to do this. ये वकार अहमद कौन थे? वकार अहमद establishment secretary थे, but he is not witness in this case. He wasn't produced. No. तो इनके खिलाफ बात कर रहे हैं behind his back.
पता नहीं जी, सारे ही करते हैं बयान, बैक पे ही तो बातें होती हैं, फ्रंट पे तो बहुत नहीं, ये मुश्किल तो रिकॉर्ड हो रहा है टेस्टिमनी। हाँ, ये सही है बात है। नहीं भाई, if he is attributing things, Sir, and you वो- should have been summoned. मैं फिर रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं तो टाइम कॉन्शियस हूँ, इतना इंटरेस्टिंग ये स्टेटमेंट है, इतने इंटरेस्टिंग इसमें पॉइंट हैं, ना कि फैक्ट्स के बल्कि लॉ के। मैं तो चाहता हूँ सुने इसको। ये अभी तो मैं इधर रुका हूँ ना कि सिर्फ इससे ही देख लें कि क्या इसकी ज़रूरत थी बुलाने की। अब आगे बड़ी मज़ेदार बातें आएंगी, अभी आप इसको देखिए। बड़ा ये अब एक स्टेज पे ये बिल्कुल मोमेंट बनेगा, ये कहेगा कि आई हैव अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड। अब अनफ्लिंचिंग फेथ जिस बंदे का अल्लाह के पास, अल्लाह में है, तो क्या वो बदलता रहता है? जी जी जी, ठीक, कंटिन्यू करो। जी 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 जी। अच्छा Whenever you're tired, we'll stop. सर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अभी मेरा इसमें डेढ़ नहीं नहीं, आप चलें चलें चलें। आपका कितना टाइम हो? सर अभी कोई घंटा डेढ़ और लगेगा, ज्यादा लग जाएगा तो इसमें, क्योंकि बड़ी सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट विटनेस है। आप बताएं बताएं। 1.5 घंटा लगना। कंटिन्यू। हाँ, टाइम लगेगा सर इसमें। घंटा लाने के मौका जो अच्छा अच्छा, ठीक। ज्यादा कह रहे हैं। जी चलें, थोड़ा लेट्स एक की विटनेस तो खत्म करें। ये तो नहीं खत्म होनी सर। चले चले, हाँ, इसका चीज खत्म हो जाएगा। चले लेट्स सी। हाँ, चीज खत्म हो जाता है। ये अगर घंटा आप कह रहे हैं तो मलिक साहब 2 घंटे कह रहे हैं। मैंने कहा था कि 2 घंटे के तहत पूरा इसको एग्जामिन नहीं करना है। देखिए, आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट टाइम, बट लेट्स मेक सम प्रोग्रेस। अभी तो टाइम है थोड़ा। मुझे कोई इतराज नहीं, इसको पढ़ लेते हैं, you're tired चीज of पढ़ लेते हैं, फिर बात करें। ठीक, ठीक। चीज पढ़ लेते हैं ताकि वो फिर बाकी बातें बड़ी लंबी हैं, उसके लिए टाइम चाहिए। ये सर अब आगे आ गया। मियां अब्बास, आई रिपीटेड टू हिम द ऑर्डर्स ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर वर्बेटम। ही इज रिपीटिंग द ऑर्डर, ही इज रिपीटिंग द ऑर्डर, ही इज नॉट गिविंग हिम डायरेक्शन। मैं कह रहा हूं कि मुझे फलां ने ये कहा है। ये पहले प्राइम मिनिस्टर मियां अब्बास को कहते हैं कत्ल करो, फिर इसको बुला के कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मतलब- कहते हैं, मैं बताता हूँ प्राइम वो मिनिस्टर। तो दुनिया भर को बता रहे हैं नहीं सर। सर, नहीं क्या मतलब है? सर, अब मुझे तो मतलब नहीं पता, ये तो केस है आपके सामने। मैं तो इस केस को डिस्कस कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, मुझे उन्होंने फरमाया कि ये आई वांट टू गेट रिड ऑफ मिस्टर कसूरी, अल्लाह उनको जिंदगी दे। ये वो कहते हैं कि जी मुझे उन्होंने कहा, और ये टास्क ऑलरेडी हैज बीन असाइंड टू मियां मोहम्मद अब्बास थ्रू योर प्रीडिसेसर। ये वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है। अब उन्होंने इसको कहा कि उसको कहो कि इस काम को करे। आगे से ये फरमाते हैं कि सर मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे कॉन्शियस के खिलाफ है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है, तो मैं नहीं कर सकता। तो प्राइम मिनिस्टर अपना टेम्पर लूज करते हैं और इसको कहते हैं कि डू यू वांट टू दैट यू वकास कीप ऑन चेजिंग यू। अब वकार के साथ इनका क्या मसला है वो कुछ नहीं पता। ये कहते हैं मैं उसी परप्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड में अपने दफ्तर आया हूँ, उसको मैंने बुलाया, मैंने वर्बेटम रिपीट कर दी, एंड दैट्स ऑल। अपने तौर से कुछ नहीं कहा। वो तो आगे आएगा ना, जो पूछा हुआ है वो बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी तो इसको आज पढ़ लेते हैं ना जी, बाकी फिर देख लेंगे। वो कहता है नहीं, मेरा एक जो देखें, ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है मेरे। नहीं सर, नहीं, बहुत फायदा है सर, प्लीज। चलिए फिर पढ़ते मैं देखिए, मैं पता नहीं, मैं नहीं, मगर मुझे देखिए पर्सन, मेरी एक रिक्वेस्ट। नहीं, मैं आपको बता दूं, मैंने वाइफ मेड दिस कमेंट, अ पर्सन बिकम्स पार्टी टू एन इलीगल एक्ट for joint benefit, mutual benefit, that could be one thing, or to aspire to an office, that could be another thing, but he's already got the office, or he can decline the office. There's nothing blackmailing कि प्राइम मिनिस्टर को क्या करेंगे, नौकरी से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूं लूज आउट सर, मैं गुजारिश करता हूं, अब ये फैसला करना है। नहीं, मेरा मतलब वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं डाल रहे हैं, कह रहे हैं वकार अहमद तुम विल बी वेरी। देखें, मेरी गुजारिश फिर ये होगी कि मैं चाहता हूं कि आपने मुझे एक ड्यूटी असाइन की है। नहीं, चले करें। मैं कहता हूं सबको समझ आ जाए। चले करें। मेरा टारगेट ये है, मेरा पर्पस ये है। ठीक। हाँ, ये मेरा मकसद है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नो नथिंग सर, मैं आई एम एट योर डिस्पोजल।
आगे जी सुनिए. I returned to my office in this perplexed state of mind and called Mia Abbas. I repeated to him the orders of then Prime Minister verbatim. I was surprised to find that Mia Abbas was the least disturbed. He told me that I was not to worry about it, that he would see that the order of the Prime Minister